जब हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमें बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो उसमें जो एप्लीकेशंस हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसके हवाले से जब देखा जाए, एक मेजर एप्लीकेशन इसकी ये है कि हम मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस की प्रोटीन्स, कमर्शियल इम्पॉर्टेंस की प्रोटीन्स को एट लार्ज स्केल प्रोड्यूस कर सकें। और इसके लिए जो बेसिक थ्योरी या प्रिंसिपल है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके एक वेक्टर में इंसर्ट करके जब हम उसको एक्सप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं किसी होस्ट सेल में, आफ्टर एक्सप्रेशन वी हैव टू प्यूरिफाई और वी हैव टू सेपरेट और रिकवर द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सेलुलर प्रोटीन्स ऑफ द होस्ट सेल। ये सारा प्रोसेस कैसे किया जाता है, इसके लिए आज हम बात करेंगे। हम प्रोटीन्स को जब बायोटेक्नोलॉजी में बात करें, वी कैन कॉल देम एज फॉरेन प्रोटीन्स और होस्ट सेल प्रोटीन्स। सो फॉरेन प्रोटीन इज दैट प्रोटीन which is expressed by a foreign gene into a host cell which was inserted in a expression vector to be used for biotechnological product purpose. अब ये जो proteins हैं, they are expressed in cytoplasm of the host cell. Mostly जो host cell use किया जाता है, that is E. coli. When these proteins express in the host cell, they express in the form of cytoplasmic granules or inclusion bodies. क्योंकि इनकी एक्सप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इनकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा होती है, सो दे मेक ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर। अगर हमें इन इंक्लूजन बॉडीज़ को देखना हो, हमारे पास फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एक ऑप्शन है। डिफरेंट फेजेस में जब हम कंट्रास्ट के थ्रू स्टडी करते हैं, देन वी कैन सी दैट देयर आर प्रेजेंट इंक्लूजन बॉडीज विच आर ओनली विजिबल इन द होस्ट सेल विच हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड, विच इज़ कैरिंग द फॉरेन जीन, एंड इफ वी यूज एनी नॉर्मल बैक्टीरियम, there will be no appearance of such inclusion bodies. These inclusion bodies are separated from the cellular proteins. जो host cell की proteins हैं, they are present in the cytoplasm either in the vacuolar form or in the cellular proteins. So they are already separated from the membrane bound proteins of the bacterial cell. The inclusion bodies are separate and they can easily be identified. Overall अगर देखा जाए, how we can separate these inclusion bodies, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप का पर्पज़ यही है दैट वी एंड अप विद आवर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। इस सारे प्रोसेस को हैंडल करने के लिए वी हैव टू पास थ्रू डिफरेंट स्टेप्स। वी आर गोइंग टू समराइज दो स्टेप्स एंड देन वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट द प्रोसीजर। एज you know that the bacterial culture is established in liquid at large scale. So first of all, we have to settle all the bacterial cells so that we can cut down the volume and we can handle the bacterial cells in relatively smaller vessels. For that purpose, we centrifuge the culture so that all the bacterial cells settle down. In order to get out everything from the bacterial cells, we have to lyse the host cells. We have to break its outer covering, its cell wall. We have to rupture its cell membrane, and it can be done by mechanical techniques or by sonication or by some treatment of lysozyme and detergent, enzymatic treatment with some detergent. Once the cells are lysed, then they can be subjected towards the centrifugation so that on the basis of their density, inclusion bodies can be separated from rest of the cellular debris, and it is done by two methods. Either we use Triton X100 in the presence of EDTA or urea. This washing is mandatory so as we can remove the cellular proteins. The cellular proteins are removed. Whatever is left behind is the foreign proteins or the protein of our interest. ये वॉशिंग कंडीशंस जो हैं, इनकी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है।
हम अगर विदाउट ऑप्टिमाइजेशन चलें मींस हमें डिफरेंट कंसंट्रेशंस, डिफरेंट जो टाइम्स हैं इंक्यूबेशन पीरियड के, उनको एडजस्ट करना है. इट कैन हेल्प टू इंक्रीज द yield or recovery of the protein of interest more than 90%. If we are not paying attention towards optimization of the conditions, हमें foreign protein मिल तो जाएगी but that would not be so sufficient जिसकी हमें expectation है. और उसके बाद जो purified material है इसको further purification की तरफ लेके जाया जा सकता है using different steps so as it can be used for purpose, whether it needs to be used for experimental purpose or it needs to be used as a medicinal product. So these different purposes need different levels of purification.